Good morning to one and all. In the last lecture of the analytical, we talk about that single beam fluorimeter and a double beam fluorimeter, right? Just I will recall this part and we will proceed further. I explained this particular single beam filter fluorimeter. Now the same way there is a similar construction for this double beam fluorimeter. As far as this single beam fluorimeter is considered. See, double beam fluorimeter is similar in construction, but with the difference that the exciting radiation is split into two beams, one passing through the sample and other passing through the blank. यहाँ पे जो है सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये डायग्राम में आपको पता चलेगा। और ये डायग्राम यहाँ पे डायरेक्ट हम सैंपल में डालते थे, मतलब जो रेडिएशन आता था, यहाँ पे क्या करने वाले, जो रेडिएशन आने वाला है उसको हम क्या करने वाले, स्प्लिट करने वाले हैं। यहाँ पे प्राइमरी फिल्टर दो दिख रहे, आपको पता है, बाद में लेंस, प्राइमरी फिल्टर, लेंस, ओके, लेंस, प्राइमरी फिल्टर, लेंस। यहाँ पे एक सैंपल क्यूवेट है और दूसरी जगह पे ब्लैंक क्यूवेट है, मतलब एक में सैंपल सॉल्यूशन है और दूसरे में ब्लैंक है, राइट। तो यहाँ पे दोनों में से बाद में यहाँ से भी रेडिएशन आएगा, यहाँ पे भी रेडिएशन आएगा, इनको दूसरे लेंस पे हम ट्रांसफर करेंगे जिसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। एंड वो कन्वर्जिंग लेंस से रेडिएशन किधर जाएगा, सेकेंडरी फिल्टर को, सेकेंडरी फिल्टर से किधर जाएगा, पीएमटी को, और देन आपका रीड आउट डिवाइस। अभी यहाँ पे क्या होगा, ए सीरीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन or say experimental substance of known concentration is prepared. If fluorescent intensity of each is determined with reference to okay, fluorescent intensity of each is determined with reference to blank taken at 0, a calibration graph is plotted for F versus concentration. The graph will be linear. The fluorescent intensity of the experimental solution is then found. The concentration of their solution can be determined from the graph. अभी फ्लोरीमेट्री के एप्लीकेशन से it is convenient method of for the quantitative analysis at concentration ranges much lower than the spectrophotometric determination. मतलब जहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो फंक्शन करना यानी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए स्टॉप होता है, उसके आगे हम फ्लोरीमीटर यूज कर सकते हैं। Metal ions can be detected by estimating the fluorescent intensity of their fluorescent organic complexes. मतलब क्या करते हैं, मेटल का ऑर्गेनिक के साथ में, ऑर्गेनिक मॉइटी के साथ में क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी द फ्लोरेसेंट, एंड देन ओनली यू कैन मेजर द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यूरेनियम कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी ऑफ द इट्स कंपाउंड। 8 हाइड्रोक्सिक quinoline forms a fluorescent complex with the aluminum, then the your beryllium, zinc, ions, etc. Okay. CD forms a bright, cadmium forms a bright blue fluorescent complex with the 2C2 hydroxyl phenyl benzoxazole. Okay. Another method of inorganic fluorimetry is based on the decrease of fluorescent as a result of the quenching action of the substance being determined. This has been used for the estimation of the anions. Example, iodine has been detected by virtue of its ability to decrease the fluorescence. मतलब आयोडीन को अगर एस्टिमेट करना होगा तो वो क्या करता है, फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी डिक्रीज करता है, तो anion you can that use. Fluorimetry is useful in organic and biochemical analysis. Vitamins B1 and B2 can be estimated. An aqueous solution of B2 is fluorescent and can be directly determined. Vitamin B1 is non-fluorescent, but its oxidation product thiochrome in alkaline solution fluorescence with an intense blue color.
fluorescence with an intense blue color. ओके उसका अगर आप ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट लेंगे तो फ्लूरेसेंट है. द ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द सिस्टीन, गोनिडीन, सैलिसिलिक एसिड एंड यूरिक एसिड can be determined by using fluorimetry. Medicinal compounds such as the steroids, phenobarbital, chloroquine, okay, and adrenaline can be estimated. Fluorescent indicator is a substance which fluoresces with the particular color depending on the pH of the solution. This indicator can be used in titration of the intensely colored solution. अगर बहुत ही colored डार्क कलर के जैसे सॉल्यूशंस है उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं. यहाँ पे दिया है देखो यूएजिन है, shows a green fluorescent pH range of 3 to 4. फ्लूरेसिन है, shows the green fluorescence at pH. Then fluorometric reagent है which can be used for a number of cations analysis. 8-hydroxyquinoline is used for the aluminum and lithium. Benzoic is used for the zinc analysis. These reagents have aromatic structure and forms the chelates with metal ion and they exhibit fluorescence. These reagents, okay. Now we have to talk about phosphorimeter. Phosphorimeter we have to see now. The heading is not there. Phosphorimetry. ओके सी जो कोई कंपाउंड है वो जो फ्लूरेसेंस देता है वो फॉस्फोरेसेंस भी देता है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. व्हाट इज देयर लिस्टेड कि जो फ्लूरेसेंट मटेरियल रहता है फ्लूरोसेंस देता है वो फॉस्फोरेसेंस भी देना चाहिए ऐसा बताया. मतलब कि इमीडिएट इमिशन ऑफ रेडिएशन जो इसके पास रहते हैं उसके पास डेड रेडिएशन भी रहते हैं. मतलब एक टाइम के बाद आने वाले रेडिएशन भी रहते हैं. ओके मतलब ऐसा होना चाहिए एज वेल. Hence, any instrument used to study phosphorescence must be able to distinguish between the two. मतलब फॉस्फोरीमीटर का काम क्या है कि it has to distinguish between two कि फ्लोरेसेंस है या फॉस्फोरेसेंस है. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है. यहाँ पे जेनॉन लैम्प है, मोनोक्रोमेटर है, उसके बाद में ये स्लिट्स सबको नजर आ रहे होंगे. ओके तो ये स्लिट्स ओपनिंग जो है ये ट्रांसफर करने के लिए रेडिएशन. और यहाँ पे एक रोटेटिंग कैन है. ओके डेवर फ्लास्क है विद दैट पर्टिकुलर नाइट्रोजन. उसके अंदर जो नजर आ रही है सैंपल सेल है. यहाँ से रेडिएशंस पास होगा वो सैंपल पे जाएगा, वहां से इमिट होगा और यहाँ पे आएगा मोनोक्रोमेटर को जाएगा, पीएमटी को जाएंगे, रीड आउट होगा. नीचे इन द बेस ऑफ दिस यू कैन सी द मोटर. और ये मोटर किस लिए है तो उसको रोटेट करने के लिए. यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लिट्स है, ओपनिंग्स है, बराबर है. तो घूमना चाहिए ना कि जैसे रेडिएशन आएगा सब रेडिएशन एक साथ जाने वाला है क्या नहीं है. तो रोटेट होगा तो ये यहाँ की स्लिट्स ओपन हो जाएंगी. हियर यू कैन सी द स्लिट विल बी ओपन. ये यहाँ पे भी एक स्लिट है, ये ओपन हो जाएंगी. जब एक हाफ में इधर रेडिएशन जाएंगे अंदर तो अंदर इंटरैक्ट होंगे, उसके बाद में बाहर आएंगे. दैट इज इमिशन यू कैन कॉल. See, the phosphorescence is used in which a delay between the time of irradiation of the sample is done and phosphorescence is observed. The phosphorescence consists of a hollow
सिलेंडर, और उसे हम कैन भी कहेंगे, having two slits in the circumference which are equally spaced. A pair of rotating shutters with opening is driven by a motor. The shutters are arranged such that the opening is one is in line with the uncut portion of the other. The working of phosphorimeter is similar to the fluorimeter. Okay, the light from the xenon lamp passes into a primary filter and fall on the sample. The sample cell of fused quartz is kept in liquid nitrogen, temperature दिया है -196 degree centigrade in the Devar flask. After irradiation, the light is cut off using the rotating shutter. During the darkening, the phosphorescent light is allowed to pass through the second slit into the second filter. The emergent beam is then sent to PMT, where its intensity is measured. Resolution time, it is a time interval between the time of irradiation of the sample and the time of detection of light by TMT. A definition important है इसमें आएगा. Then the grating monochromators can be used instead of the filter. यहाँ पे जितनी चीजें उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. Okay, application, there is a limited number of application as compared to the fluorimetry. It is used in the trace analysis of the number of organic compound with the conjugated rate system. It is used in the detection of the small amount of cocaine, procaine and phenobarbital in the blood serum. It is used in the determination of the aspirin in the blood serum and the plasma. It is frequently used in the biochemical and environmental studies. अभी कंपैरिजन देखने की दोनों में डिफरेंस क्या है. Phosphorimetry. The experimental setup of the phosphorimetry is more complicated than the fluorimetry. Hence, phosphorimetry has limited application. Then phosphorimetry studied phosphorimetry studies are done at low temperature, whereas fluorescence measurements are done at room temperature. Phosphorimetry is more sensitive than the fluorimetry because scattering of light is less in phosphorimetry due to low temperature. Phosphorimetry is perfect when sensitive measures are to be made. In the case of the complex sample, phosphorimetry is more selective than the fluorimetry. These are the comparative points. कभी-कभी क्वेश्चन रहता था. Comparison of the fluorescence and phosphorescence as a fluorimetry and a phosphorimetry with the absorptions method. The sensitivity of these two techniques okay. This is the sensitivity of this fluorimetry phosphorimetry is generally is generally 10 to 10 raised to 3 times greater than the sensitivity of the absorption method. Fluorimetry and spectrophosphorymetry
Okay. Have greater specificity and selectivity than the turbidimetry. It involves the measurement of the decrease in intensity. ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग है. Then absorption method, because in fluorimetry and phosphorimetry both the wavelength of the excitation and the wavelength of the emissions are selected, whereas in absorption methods only the lambda for absorption is selected. ये difference है. Then absorption methods are widely used for large number of compounds than the fluorimetry, because limited number of compounds show the fluorescence. Okay. अब एक नया लेसन जो है मैंने वहाँ पे लिया नहीं, मगर एमसीक्यूज के पर्पज से वो इम्पोर्टेंट है. ओके. टर्बिडिमेट्री एंड नेफिलोमेट्री. यहाँ पे टर्बिडिमेट्री में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. और नेफिलोमेट्री में क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन. स्कैटर्ड लाइट इज ऑफ द सेम वेवलेंथ एज द इंसिडेंट लाइट. ये इसके लिए आता है MCQs के लिए. That's why it is given there. Now the factors affecting the scattering of radiation, एक क्वेश्चन ही पॉपुलर रहता था सब्जेक्टिव टाइप में, इसमें यहाँ पे लिया है टर्बिडिमेट्री का और इसका है नेफिलोमेट्री में का है. ओके. तो that's why that is given here. See that particular the factors are there. I am not going to discuss that. First one is the effect of the concentration on the scattering, particle size on the scattering, wavelength on the light scattering, and refractive index on the scattering. These four factors are there. वो एक 5 मार्क का क्वेश्चन जनरली आता था, इसलिए that was provided in that. But now that is not the part left. If the exam is based on the MCQ purpose, then it will not matter like that. Okay, just prepare all the part. Okay, please prepare MCQ for your convenience. Okay, here unit 3 of the analytical chemistry has been finished.